So, students, today is World Cancer Day, and I'm going to tell you these four different sub areas. Let me first start with what is cancer. So, I hope all of you are aware. This is just nothing but the division of cell in a very irregular or unregulated manner. In this case, in this disease, cells will be grow like this in a very unregulated manner. Sometimes we call it as a metastasis. Why it is actually happening? This is happening because of the mutation. Because of the mutation. For example, this is your gene, and this is a DNA. You can see the DNA's base pair are actually getting changed. DNA's base pair are actually getting changed. There are few common mutations actually TP53 and P53. These are the involved, or these kinds of mutations are highly that is dominant in maximum type of your cancer diseases. If I tell you more, if I tell you more, see, in many of the cases, you'll be observing people are getting cancer from their ancestors in their inheritance. If your parents or if you somebody in your relatives already got affected by cancer, there are chances you'll be getting cancer. Okay, but in maximum cases, this mutation is actually happening due to radiation or other things. I will tell you more how it is happening. This is the picture. Normal cell में मान लो कोई अगर damage होते हैं, we have one damage repair mechanism in normal cells. But in cancer cells, देखो first mutation यहाँ पे हुआ, second mutation, third mutation. After fourth mutation, it will be become cancer or unregulated or uncontrolled growth will be happen. ठीक है, cancer will not happen at the first stage or first that is after the first mutation, cancer will be not happen. So if I tell you more, बहुत टाइम जो है in maximum cases actually confused between tumor, because tumor को हमेशा लोग कैंसर मान लेते हैं. Answer is wrong. All the tumors are not actually cancer. There are two types. What is benign? Another is the malignant. Now, what is benign? Benign is something which will be actually not spread in your entire body. For example, let me show you this picture. For example, these cells are actually growing in an unregulated manner, but these cells will be remain here. These cells will be remain here. It will not metastasize. It will do not show the metastasis. ये बॉडी के बाकी पार्ट में जो है स्प्रेड नहीं होंगे. If it is malignant, then it will spread throughout your body like this. For example, मान लो हमारे बॉडी में बहुत टाइम जो है ऐसे सेल्स और ऐसे मोल्ड जो है ग्रो होते हैं like this also. Malignant केस में if it is metastasis, if it is showing metastasis, हमारे बॉडी की और भी किसी पार्ट में अगर हो, then it is very dangerous things. कैसे पता चलेगा? How? Like this. At the beginning it will look like this, and if it is remaining here, then this you have no need to worry. ये उतना harmful नहीं. This is benign. Malignant के केस में it will spread throughout your body. ठीक है? So let me just skip these things, do and don'ts. So how you'll be able to know that whether it is malignant or it is benign? Only doctor, and only by doing some pathology test you'll be able to come to conclusion. Let me tell you some figures why I am interested to that is spending 10 to 15 minutes to cancer, because of this data. दुनिया में second जो in our world, cancer is the second most leading cause of death after cardiovascular diseases. Lots of people that is I know, they are now suffering from cancer. That's why I do not want anybody who, that is coming in my network or in my known who will be suffering from cancer. मैं बताऊंगा तुम लोगों को कैसे तुम लोग अपने आप को कैंसर से तुम लोग सेव कर सकते हो. देखो, पूरा दुनिया में जो हमारा एशिया है, सबसे ज्यादा जो है एशिया में हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल्स आर एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम कैंसर. एंड if I tell you, if I zoom in Asia, if I tell you about India, in India also one woman dies of cervical cancer in every 8 minutes. Can you imagine? हर 8 मिनट में इंडिया में एक जो है महिला की डेथ हो रही है बिकॉज ऑफ सर्वाइकल कैंसर. इंडिया रैंक्स थर्ड इन कैंसर केसेस आफ्टर चाइना एंड यूएस. Every that is a 2 women diagnosed with that is a breast cancer, 1 woman dies. ब्रेस्ट कैंसर जो है इतना ज्यादा दैट इज आज के टाइम में कॉमन हो गए है. मेरी मम्मी जो है, माय मदर, शी वाज आल्सो डायग्नोस्ड विद ट्यूमर इन हर ब्रेस्ट. After that, there was some surgery, but with God grace, it was not malignant, it was benign.
ठीक है. Every year India reports millions of new cases, and yes, tobacco is a very big cause of cancer. वर्ल्ड टोबैको डे जिस दिन था उस दिन जो है इन्होंने इन्फॉर्म किया था मिनिस्टर ने 3500 लोगों की डेथ हो रहा है just because of cancer related to tobacco. ठीक है. And here are few data of states. Haryana is a high that is a prone state of cancer. Northeast also. I am lucky कि हमारा त्रिपुरा इस लिस्ट में नहीं है. And here is another that is a picture by which you can see which type of cancer are actually highly prevalent. You can see सबसे ज़्यादा जो that is a cancer हो रहा है, this is actually pharynx or nasopharynx. Just a second, let me just put my charger. Just a second, let me just put my charger. Yes. Students, can you see the slide? Yes, sir. Okay. Where it is? Yes. So, मेरा actually बैटरी खत्म हो गया था लैपटॉप. ओके, सो देखो बच्चों, द थिंग इज दैट फेरिंग्स और नेसोफेरिंग्स कैंसर जो है सबसे दिस इज वन ऑफ द लीडिंग. अनदर इफ आई टेल लंग कैंसर, देन यू लीव और ओरल कैविटी कैंसर. ओरल कैंसर बहुत ज्यादा हो रहे हैं लोगों को, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ स्मोकिंग. देन यस, ब्रेस्ट कैंसर, स्टोमक कैंसर, सर्वाइकल कैंसर. दिस आर द मोस्ट कॉमन कैंसर दैट इज इन इंडिया. ठीक है, ऑल्सो इन योर ल्यूकेमिया. सो यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल में जो है फ्यूचर में किसी भी तरह कैंसर ना हो जाए. आई विल टेल यू कैसे जो है हाउ यू बी एबल टू सेव योरसेल्फ फ्रॉम कैंसर. देखो और भी सम डेंजरस डेटा है मेरे पास. WHO ने कहा था 1 in 15 इंडियंस विल डाई बिकॉज ऑफ कैंसर, एंड इंडिया रिकॉर्ड estimate of 12% rise of cancer cases, and India will see 13.8 lakh cancer cases by the year of this India. Stop sharing. Now, after learning the prelims, let me tell you how you'll be able to diagnose or how you will be able to that is identify कैसे जो है तुम अपने आप को that is what are the symptoms, how you'll be able to come to a conclusion or you will be able to understand that yes, there are chances that you might be getting some cancer. देखो इसके लिए जो है unusual lumps or swelling which are often painless. बॉडी के किसी एरिया में कोई अगर स्वेलिंग जो अगर हो तो यू हैव टू बी वेरी सीरियस. और मान लो बहुत टाइम जो है दैट इज परसिस्टेंस कॉपिंग और ब्रीदिंग लेसनेस और डिफिकल्टी इन swallowing. If there is some problem in lung, if the lung cells are growing very rapidly, lung cancer, in that case persistent coughing will be happen, or changes in the bowel habit, or needing to urinate urgently, or unexpected bleeding including from your vagina, और अनएक्सप्लेन्ड और अनइंटेंशनल वेट लॉस. बेवजह अगर मान लो तुम्हारा अचानक से जो वेट लॉस हो रहा है, दिस इज ऑल्सो ए साइन ऑफ कैंसर. और फैटिग और एक्सट्रीम टायर्डनेस, एंड ऑल्सो इफ आई टेल न्यू मोल्ड और अदर काइंड्स ऑफ चेंजेस इन मोल्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स साइज, शेप, और अनएक्सप्लेन्ड और ऑनगोइंग पेन. बॉडी के किसी एरिया में, दिमाग में मान लो बहुत पेन हो रहा है, क्योंकि इन ब्रेन कैंसर यू विल बी गेटिंग हैवी पेन.
it will be different than your headache or other things. Or in that is a breast size. Okay, there is some test called mammography. By doing that test, you'll be able to that is identify that somebody having breast cancer or not, or feeling less hungry, or a spot or a sore or wound, mouth ulcer, or persistence pain. Okay, these are the few sign. अब देखो, if you're getting multiple sign, multiple symptoms at that is in a person, you have to be very serious. You have to go to doctor. You have to keep your sample, and you have to see whether this is a part of cancer or not. Okay, also your heavy or dancing night sweats. American Cancer Society जो है, they have actually developed a very simple phenomena, very simple term. They call it as a question. C for change in the bowel, that is bladder habit. A for sore that does not heal. U for unusual bleeding or discharge. T for thickening or lump in the breast or elsewhere. I for indigestion or difficulty in swelling. O for obvious changes, and N for nagging, cough, or hoarseness of voice. So caution. Remember that thing. You may take on screenshot, and you may remember that thing. बिकॉज तुम लोग फार्मेसी की पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हारे आसपास कोई इंसान में अगर ये जो डिजीज है दिखते हैं, दिस इज योर ड्यूटी टू टेल द पर्सन. देखो, कैंसर की फर्स्ट स्टेज में अगर हम उसको सही ट्रीटमेंट हम दे पाए, वी कैन सेव दैट पेशेंट. लास्ट स्टेज में जब चला जाएगा, तब वी कैन नॉट सेव द पर्सन. तुम लोगों ने देखे कितने डेथ्स हो रहे हैं इंडिया में. नाउ हाउ विल बी एबल टू फाइट अगेंस्ट कैंसर. देखो, वी आर एक्चुअली लर्निंग दिस सब्जेक्ट कॉल्ड फार्मेसी. हमारे लिए खुशी की बात ये है, हर साल बहुत नए नए जो है ड्रग्स आ रहे हैं. Since 2001 to 2020, huge number of drugs are available for cancer. Huge number of drugs. But the problem is side effect and the cost. If I summarize, what are the treatments option available? You have hormone therapy, surgery, bone marrow transplantation in case of leukemia and other kinds of bone marrow related disease, chemotherapy, or targeted therapy, or radiation therapy, or human therapy. But they have some problem. Hormone therapy में जो है, there will be some side effect like hot flashes, erectile dysfunction, etc. सर्जरी में क्या होगा? ऑब्वियसली ब्लीडिंग, ब्लड क्लॉट एंड अदर थिंग्स. बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन जो है, हम हर पेशेंट्स में नहीं कर सकते. यू कैन नॉट डू बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन इन एवरी पेशेंट्स. नोजिया, वोमिटिंग एंड अदर काइंड्स ऑफ दैट इज अ सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स विल बी देयर. केमोथेरेपी, ऑलरेडी यू आर अवेयर व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ केमोथेरेपी. आयुष्मान खुराना है ना, आयुष्मान खुराना फेमस एक्टर, उनकी बीवी को जो है हो गया था ब्रेस्ट कैंसर. फिर जो केमोथेरेपी किया, सारे जो बाल है वो झड़ गए. There is another actress, I cannot recall her name, Divya Bharati या some actress, सोनाली बिंद्रे, उनको हो गया था ब्रेस्ट कैंसर. सारे बाल जो है झड़ गए बिकॉज केमोथेरेपी दिया गया था. टारगेटेड थेरेपी में भी skin loss and other problems will be there. And yes, radiation therapy is very dangerous, fatigue or other kinds of problem. Immunotherapy is good, but again pain or other things जो है होंगे. So what is the alternative? Before going to this stage, or before going to this kinds of treatment, what is the alternative? The answer is you can stop use of tobacco. ये जो फिल्मों में देखते हो ना, कबीर सिंह, he is taking cigarette and जो है पूरा with background music, कबीर सिंह जो है टोबाको सिगरेट के साथ जो एंट्री ले रहे हैं. This is the cause linked to 71% of lung cancer deaths and accounts for at least 22% of cancer deaths. अगर तुम्हारे क्लास में कोई है, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारी फ्रेंड, तुम्हारे क्लासमेट, somebody is smoking, please request him, please tell him that stop smoking. शायद एक दिन कैंसर से जो है बहुत जल्दी उसका डेथ हो जाए. And if you know some people, always request them that don't use tobacco. Save yourself from cancer. And also I request that you may also can use some sunscreen to protect yourself from sun, because there's something called ultraviolet radiation. उससे जो है तुम्हारा स्किन में म्यूटेशन आके वहां पे बहुत सारे मोल वगैरह जो हो सकते हैं. यू कैन टेक वेरी हेल्थी डाइट. फास्ट फूड इसको अवॉइड करो. जो हेल्थी डाइट, नेचुरल प्रोडक्ट जो है उसको तुम लिया करो. क्यों, इसके बारे में बताऊंगा मैं अभी इन माय नेक्स्ट स्लाइड. You can also do some physical activity every day at the morning, and I will suggest you may take some vaccines for human papilloma virus or hepatitis virus. You are listening correctly, human papilloma virus, hepatitis virus. ये जो सारे हैं, these viruses are also sometimes causing cancer. So you can take the vaccine for human papilloma virus or hepatitis vaccine. And red meat, I hope North India से maximum लोग red meat तुम लोग consume नहीं करते हो. Avoid red meat. And yes, again, Kabir Singh,
लिमिट अल्कोहल कंजम्पशन. अल्कोहल भी एक मेजर कॉज है फॉर योर दिस कैंसर. बिकॉज अल्कोहल से क्या हो रहा है, यू आर जस्ट टेकिंग अल्कोहल रैपिडली ड्यू टू दैट इज अ हाई कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल. Again, some genetic changes are actually happening in various parts of your cell because of the high metabolism. तुम्हारा लीवर जो है उसको बहुत ज्यादा मेटाबॉलिज्म करना पड़ रहा है. सो एंड ऑल द अल्कोहल्स आर नॉट गुड. कबीर सिंह जो मूवी है उसमें ठीक है, मूवी में एवरीथिंग इज फाइन, मूवी में जो है सब कुछ लास्ट में ठीक ठाक हो जाते हैं. बट इन रियलिटी यू विल बी गेटिंग कैंसर, नॉट दैट प्रीति. कबीर सिंह को लास्ट में प्रीति मिल गया था मूवी में, बट इन रियलिटी यू विल बी नॉट गेटिंग प्रीति, यू विल बी गेटिंग कैंसर. So be careful, limit alcohol consumption. And also, you should protect yourself from ultraviolet radiation. And yes, chemical hazards से दूर रहा करो. Many of the students are from बहादुरगढ़. बहादुरगढ़ में बहुत सारी फैक्ट्रीज है, बाहर से भी from those factories there are lots of toxics and other chemicals are actually emitting. You should protect yourself from those chemical hazards and avoid to exposure to industrial area because of environmental toxin. And you should take vitamin D. Vitamin D को बहुत अच्छा माना गया है. Vitamin D can save you from various kinds of cancers because this is very effective in your that thing in your that is to boost your immunity. And here is a picture why I have told you to take healthy diet. Students, my screen is visible, na? Yes, sir. Yes. Okay. So here is a picture why I have told you to take healthy diet. देखो ये जो सारे तुम देख रहे हो तुम्हारे स्क्रीन में, चेरीज, ग्रीन टी लीव्स, टर्मरिक and all those other that is natural things, natural products. In all those natural products there are some ingredients, active pharmaceutical ingredients are present which are effective against cancer, like curcumin. कहाँ मिलते हैं? जो है टर्मरिक में. curcumin को तुम आइसोलेट करके अलग से लो, it will be very difficult, it will be costly. You can get curcumin in your turmeric, so why not take some turmeric? ठीक है, why not take tomatoes, why not take some this thing called grapefruit or orange? This is very easy, है ना. इसलिए फास्ट फूड और टोमेटो इसको अवॉइड करो एंड टेक दिस थिंग्स, ब्लूबेरीज, जिंजर, ऑनियंस, ये सारे चीज को जो है तुम लोग ले सकते हो. दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू सेव योरसेल्फ फ्रॉम कैंसर. ठीक है. So this is the summary, whatever I am trying to tell you, what I want that you should change your lifestyle and what are the things you should do. You should don't use tobacco, protect yourself from sun by using sunscreen, eat healthy diet, limit your consumption of red meat, जो है take some vaccine for human papilloma virus or hepatitis virus, and you should have maintain a healthy or and you should be physically active. And yes, limit alcohol consumption. शराब वराब जो है never you encourage those things. Protect yourself from ultraviolet radiation, protect yourself from chemical hazards, and regular जो है screening करो. If you get some mold or something in your body part, you should do some screening. Vitamin D लो and you should avoid industrial or environmental toxin. देखो कैंसर एक बार जब हो जाएगा तब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा. So that's why today you have these options, and today is World Cancer Day. So as a student of pharmacy, you should know those things, and you should also take screenshot, and you should also spread the people. You should also inspire the people that what they should do. And these are the fruits that I have mentioned: garlic and other things, tomatoes. This can that is a boost your immunity, and many of the cases this can also recover to the people from cancer. So that's it from my side on to inspire you फॉर कैंसर. आई होप तुम सब लोग जो है हमेशा जैसे आज तुम लोग बहुत ही स्वस्थ हो, फिट हो, और जो है यू आर स्माइलिंग एंड एवरीथिंग इज सो फाइन इन योर लाइफ. तुम सब लोग जो है हमेशा ऐसे ही तुम लोग फिट रहोगे एंड यू पीपल विल बी फ्री फ्रॉम कैंसर. सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे. आई होप तुम लोगों को काफी अच्छा लगा होगा, तुम लोगों ने बहुत कुछ सीखे होंगे. आई एम एंडिंग द प्रेजेंटेशन.